Hello everyone, welcome to this session on verbal ability. I am Ashish and today we are going to discuss something which troubles the students very much, especially of those who belong to Hindi medium or who have done their schooling from state boards. Yes, I'm talking about vocabulary. So, today we are going to discuss some methods which will help you to remember the words forever. आज की सेशन में जितने आप वर्ड्स देखेंगे उनको आप कभी भूलेंगे नहीं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन. So there are certain words on your screen. Try to read these words and identify how many meanings do you know. There are total 14 words and try to calculate your score. Out of 14, how much can you identify? How many can you identify? Before I start discussing the method, let's try to understand the concept. So we are going to understand the concept of prefix in vocabulary. तो आज के जितने वर्ड्स हैं वो सब प्रीफिक्स बेस्ड है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वर्ड स्ट्रक्चर. So typical word will look like this. There would be a root word, then there will be a prefix, and then there will be a suffix. So the root word will contain the base meaning of the word. और आज का जो हमारा फोकस रहेगा इस सेशन में दैट विल बी ऑन प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्सेस कैन बी पॉजिटिव, प्रीफिक्सेस कैन बी नेगेटिव, and they can also be neutral. Positive prefix will give a positive meaning to the word and negative prefix will give a negative meaning to the word. So now let's try to go back to our word list and try to identify the meaning of the word using the prefix. Again I am repeating, root word will contain the base meaning of the word and prefix can give a positive or negative connotation to the word, or it can also be neutral. So let's go back to the list. So if you see, the left hand side list contains the positive prefix and the right hand side list contains the negative prefix. So the first 4 words, यहाँ पे prefix है u, eu, which means good. तो जिस वर्ड से भी पहले EU आ जाएगा दैट मीन्स उसका एक पॉजिटिव मीनिंग होगा. EU मीन्स गुड. तो पहले जो 4 वर्ड्स हैं हमारे, यूरेका, यूफेमिज्म, यूफोरिया एंड यूथनेसिया. सो यूरेका मीन्स अ क्राई ऑफ जॉय. तो जब कोई इंसान बहुत खुश हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट के बारे में कहा जाता है कि जब उनका experiment successful हो जाता है तो that is a eureka moment for them. So that is a cry of joy. So it gives a positive meaning to the word. Euphemism is a good way of saying something bad. Euphemism का meaning होता है good way of saying something bad or harsh. For example, imagine one of your acquaintances got hurt और उसके पैर में चोट लग गई है. अब आप उसके पास जाते हैं और आप बोलते हैं कि अरे तेरी टांग कैसे टूट गई भाई. सो दिस इज़ नॉट अ नाइस वे टू आस्क दीज थिंग्स. उसको चोट लग गई और आप पूछ रहे हैं टांग टूट गई भाई तुम्हारी. सो अ बेटर वे इज़ टू आस्क कि भाई साहब आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ. सो दिस इज़ अ यूफेमिज्म. व्हेन यू से समथिंग विच इज़ bad but you say it in a good way, so that is called euphemism. So eu again denotes good, so it's a good way of saying something. Euphoria means a great happiness. So again it denotes a positive meaning. Euphoria is a great happiness. Euthanasia is a good death. मर्सी किलिंग के लिए भी इसको यूज करते हैं. सो यूथनेसिया. तो अगेन ऑल द वर्ड्स कंटेन्ड यू. तो जो भी वर्ड EU से स्टार्ट होता है उसमें
we can say कि that will have a positive meaning because EU represents good. अब आप बोल सकते हैं कि सर यूरोप भी तो होता है. So ज्ञानी लोगों, Europe is named after a queen. Hence it will not qualify this criteria. Europe हमारे इस रूल को फॉलो नहीं करेगा. So ये ध्यान रखिएगा. EU means good. So now let's move on to the next prefix, which is bene, और ben भी बोलते हैं कई बार इसको. That also means good. तो again it's a positive prefix. तो अगर अगले 3 वर्ड्स आप देखेंगे तो benediction, benevolent and benign. So diction is a way of saying something. Benediction means to say something in a good way. और अगर benediction का literal meaning देखेंगे that means a blessing. Next word is benevolent. Again benevolent में भी bene आया हुआ है, so that means good. Benevolent means someone who does good to others. That means a kind person. So someone who does good to others. Similarly, benign is also the same. Benevolent and benign आप synonyms भी मान सकते हैं. So it is again someone who does good to others. So the left hand side contains all the words with positive prefixes. Now let's look at some examples with negative prefix. So सबसे पहले जो 4 वर्ड्स हैं इनमें जो प्रीफिक्स है दैट इज मिस. मिसोजिनिस्ट, मिसोगमी, मिसैंड्रिस्ट एंड मिसहैप. सो मिस जो हमारा प्रीफिक्स है दैट मीन्स बैड और दैट ऑल्सो मीन्स टू हेट. तो जहाँ पे मिस आ जाएगा उन वर्ड्स में प्रॉबेबली ये 2 चीज़ें होंगी. फॉर एग्जाम्पल मिसोजिनिस्ट मीन्स a man who hates women. So that is the meaning of misogynist. अब आप पूछ सकते हैं तो फिर जो women who hates men वो क्या होती हैं? And do not say feminist. Feminism is entirely different. कुछ लोग यही सोचते हैं कि जो women hate करती है men से that is feminism. So that is misandrist. Someone who hates men is a misandrist. तो इस वर्ड का मीनिंग भी हमें पता लग गया. मिसोजिनिस्ट इज समवन हु हेट्स वुमेन एंड मिसैंड्रिस्ट इज समवन हु हेट्स मेन. मिसोगमी इज टू हेट मैरिज. सो गैमी इज मैरिज, इट रिप्रेजेंट्स मैरिज. सिमिलरली देर आर 2 more words, monogamy and polygamy. Mono means single, so one marriage. Poly means multiple, that means multiple marriage. So misogamy is to hate marriage, monogamy is single marriage, and polygamy is multiple marriages. Misandrist हमने कर ही लिया था. Mishap is a bad event. तो मिस का हमने देखा था मतलब बैड भी हो सकता है या मिस में हेट भी आ सकता है. सो मिसहैप इज अ बैड इवेंट. नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा जो आता है, सॉरी नेक्स्ट प्रीफिक्स जो हमारा आता है दैट इज मैल, MAL. तो इसका मतलब भी होता है बैड. तो जहाँ भी ये आ जाएगा प्रीफिक्स में उसमें भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन मिल जाएगा हमें. सो मेलेवलेंट, मैलेडिक्शन एंड मलाइन. तो अगर आपने ध्यान दिया हो देयर वाज बेनेवलेंट, देयर वाज बेनेडिक्शन. So diction is same, the way of saying something. Benediction means to say something in a good way, that is blessing. Malediction means to say something in a bad way, that means a curse. Similarly, benevolent is someone who does good to others and malevolent is someone who does bad to others, that means a wicked person. इसका सिनोनिम एक होता है malicious. तो ये बोनस वर्ड मिल गया आपको, malicious. अगेन MAL. सो malevolent and malicious are same. And the last word is malign. Malign is to say bad things about someone.
So if you are saying bad things about someone, that means you are maligning his image. So these are the meanings of all the words that were present in our word list. तो हमने कुछ positive prefixes देखे, कुछ negative prefixes देखे. Positive prefixes give positive meaning to a word, negative prefixes will give negative meaning to a word. I hope you will revise these words, and by using these techniques you will never forget the meaning of these words. In the next session of vocabulary, we will discuss some neutral prefixes. Till then, keep practicing, and if you have any doubt, you can write to this email ID. Keep learning and goodbye.